further bad debts and how to treat provision for bad and doubtful debts. Now, there may be cases wherein you are given some old provision and at the end of the year in the adjustments, you are given that the firm is to make some extra provisions, a new provision for bad and doubtful debts. As mentioned here, there might be an old provision and there might be some new provision for bad and doubtful debts. Now, if a new provision comes in, then we have to consider that during the year. Okay. And how do we treat this when we have some old provision already in place? That I'll explain you with an example. Okay, so let's have a look at the treatment. So this is your trial balance. So just to keep it simple, I'll put bad debts as 3000. Provision for bad and doubtful debts. BDD is provision for bad and doubtful debts. Now provisions always have a credit balance. So here I put it as 1500. And then the additional information given in the question is a new provision for bad and doubtful debts to be created. Debtors डाल देते हैं. At the rate 10% of debtors. So this is the simple adjustment that is given when you are given an old provision for bad debts and then you are also given in the additional information that the firm is planning to make a new provision for bad and doubtful debts. So how to treat these items? I'll just show you both the treatment in the profit and loss account and the balance sheet. Is the debit side, the credit side. Okay, so class, we start with the items given in the trial balance, put them at one place, and then we move to the adjustment. We start with bad debts. Bad debts appear on the debit side of profit and loss account. And here I write bad debts. Okay, for convenience, I'll just move this line a bit to the right so that we have more space. So two bad debts and in the inner column I write 3000. Okay. After that, since a new provision is given, for the time being I'll move to debtors and in the asset column under debtors again I will write in the inner column before calculating the final amount. I write down debtors amount is 50,000. Now we have been asked to create a new provision. So the new provision will always be created on the net debtors. और नेट डेटर्स आपके 50,000 है और कोई भी एडजस्टमेंट अगर दी होती है रिलेटेड टू बैड डेट्स देन इट इज ट्रीटेड बिफोर दिस. So if further bad debts were given to you in the adjustment, you will first deduct those from debtors and then you calculate the amount of new provision as we did in the example we took in yesterday's class. तो यहाँ पर और कोई एडजस्टमेंट नहीं है बैड डेट से रिलेटेड. सीधा 50,000 पर मैं प्रोविजन बनाऊंगी. 10% provision 5,000 and now the final amount of debtors in the balance sheet will be 45,000.
Okay, so this is the first effect of the adjustment. As already told multiple times, adjustments will be having at least dual effect. So first effect of this adjustment we have completed in the balance sheet, while trial balance figures will appear at a single place. Now what is the second effect of this adjustment? I move back to the profit and loss account. वहां पर आपने bad debts 3000 लिखा plus new provision. New provision is added and old provision is subtracted to get the final amount to be debited in the P&L account. So now you get the final amount of bad debts to be debited as 6500. You have created an additional provision of 3500 in the current year, क्योंकि 1500 की प्रोविजन ऑलरेडी आपके पास थी, तो आपने ओल्ड प्रोविजन को न्यू प्रोविजन के अमाउंट से माइनस करा है. Any question in this? Yes. Hopefully this is clear to everyone. Now there might be, yes, there is a question, I believe. Yes, Ma'am, Sumit. that old provision thing. ओल्ड प्रोविजन अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उसको सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेस कर देते हैं न्यू प्रोविजन से, क्योंकि अब आपके पास नया प्रोविजन आ गया तो आपको एडिशनल कितना अब अमाउंट चाहिए. 1500 का पहले ही आपने रखा हुआ था अलग. नाउ यू नीड 5000, so additional amount is 3500. So this is the additional expense. तो वो आपने P&L में डेबिट साइड पर एडजस्ट करा है. Okay, ma'am. Okay, I'll take one more question, because what happens is after a point of time bad debts they get quite confusing, क्योंकि इसमें एडिशनल बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं. तो मैं कोशिश करके I'll cover some of the points right now, and then when we will be solving questions I'll repeat what we are doing right now, and if some additional point is coming in there, so that there is no information overload right now. Okay, in the same question which we have done, what we'll do is, if I change the amount, so say let's bad debt same रखते हैं, इसकी भी अमाउंट मैं कम कर देती हूँ. I'll take bad debts amount as 1000, provision for bad debts as 4000. 4000 से एग्जैक्ट हो जाएगा, 6000 कर लेते हैं. एंड देन योर डेटर्स at 50,000. Okay, the adjustment is the same, so I'm not writing it again. Adjustment as it is. Now there might be cases wherein you will get the debit. If you calculate the debit value as in the P&L we did right now, you will get a negative value. Okay, so I just want to show this with the example. मैं P&L दिखा देती हूँ. बैलेंस शीट सेम रहेगी. Balance sheet is the same. Debtors are 50,000. Your new provision is 5,000. So the amount of debtors in the balance sheet will come to 45,000. Now when I solve this part in the P&L account, in the rough, say in the working notes, what I find is कि आपके जो bad debts हैं वो 3000 है. न्यू प्रोविजन, सॉरी, बैड डेट्स 1000 है. न्यू प्रोविजन 5000 है. और जब मैं ओल्ड प्रोविजन इसमें से माइनस करती हूँ
तो ओल्ड प्रोविजन के अमाउंट को थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, ये तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है. ओल्ड प्रोविजन when I take as 8,000, then the value I get here after making all the adjustments is a minus 2,000 net value of bad debts. 6,000 minus 8,000 will give you minus 2,000. So now this adjustment will not be shown on the debit side. It will come to the credit side of the P&L account because you are gaining 2,000 because of making new provision for bad and doubtful debts. जब पॉजिटिव वैल्यू आई थी इसका मतलब एडिशनल जो एक्सपेंस था बिजनेस के लिए वो 6,500 था. अब इस केस में सेकेंड एग्जाम्पल में नए प्रोविजन की वजह से आपके 2,000 रुपए बच रहे हैं. तो आप ये सारी जो एडजस्टमेंट है बाय बैड डेट्स 1,000 प्लस न्यू प्रोविजन 5,000 लेस ओल्ड प्रोविजन 8,000 आप ये क्रेडिट साइड पर दिखा के और यहाँ पर फाइनल वैल्यू पुट करोगे 2,000 पॉजिटिव. Okay, so if you get a positive value, it comes to the debit side of P&L because that's an additional expense for the business. But if you're getting a negative value, then we move that value to the credit side because that is a gain for the business. So when we'll be solving questions, if a case like this appears, this is how we make the adjustment. Okay. So अदर केसेस आगे प्रोविजन पर भी डिस्काउंट होता है डेटर्स के लिए. वो सब मैं अभी आगे जैसे क्वेश्चंस आते हैं आई विल टेक इट अप देयर. वन सिंपल एडजस्टमेंट आई विल टेक अप आफ्टर दीज एडजस्टमेंट दैट इज ऑफ डेप्रिसिएशन. we missed that adjustment yesterday. I'll just quickly move to that adjustment. How do we define depreciation? Depreciation is the reduction in the value of an asset due to normal wear and tear, change in technology, which is known as technological obsolescence, and say over a passage of time, if the value of the asset falls, then that is also known as depreciation. How do we treat depreciation? Now, depreciation is an expense for the business. Okay, so it will again, as an adjustment, have two effects, say in the trial balance. दो तरीके से आपको डेप्रिसिएशन दिया जा सकता है. से मशीन पर ही लेते हैं हम डेप्रिसिएशन. मशीन is of 10,000 rupees. Depreciation 1,000. This is one case. The second case can be machine appears as 10,000 and this is the second case in which depreciation can be given. Okay. So when the first case is given to you, your depreciation is already given in the trial balance. So there is no adjustment that needs to be made. What you will do is in the balance sheet on the asset side, you will write machine as 10,000. Depreciation being an expense, P&L account में डेबिट साइड पर आप डेप्रिसिएशन को पुट कर दोगे 1,000. Okay, so this is a simple case
यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी. Second case is when you are given machine as 10,000 and outside the trial balance you are given that the depreciation to be charged on machine is 10% per annum. Again दो जगह इफेक्ट आएगा. एक आपका P&L अकाउंट में आएगा, एक आपका बैलेंस शीट में इफेक्ट आएगा. एसेट साइड पर आप मशीन की अमाउंट पुट करोगे 10,000 and you will reduce it by the amount of depreciation because now the net value of the machine you are holding has fallen to 9,000. Okay, so this is the first effect of the adjustment. The second effect of the adjustment will be in the P&L account to depreciation and the amount will be 1,000. On the debit side, because depreciation is an expense for the business. Okay, so simple. If given in adjustment, depreciation needs to be deducted from the amount of the respective asset and it comes on the debit side of the P&L account. वन मोर थिंग टू चेक हेयर इज कि यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है 10% पर एनम. पर एनम का मतलब है कि थ्रू आउट द ईयर अगर आपने एसेट होल्ड करा है तो उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा. अगर यही मशीन आपको दी होती दैट इट वाज परचेज्ड ऑन से फर्स्ट अप्रैल 1st October say 2019. So now this machine has been purchased during the year and you have held this machine for 6 months. तो उस केस में आपका डेप्रिसिएशन भी 6 मंथ्स के लिए ही चार्ज होता और यहाँ पर ये अमाउंट आती 500. So now the amount of depreciation would have been 500. Final amount of asset would have been 9,500. Similarly, here also you would have charged a depreciation of 500 rupees. So you need to check when the machine was purchased. If no specific date is given, we assume it to be with the firm for the entire year. If some specific date is given, तो उस basis पर आप depreciation को charge करोगे. Okay. So we have covered around 7 adjustments till now. Let's move to one question, full-fledged question on final accounts with these adjustments. So that will help us revise the concepts covered also. So first, please have a look on your screens. The question is there with the adjustments. And what I'll ask you people is to start posting all the entries in the respective accounts. तो आप स्टार्ट करो कैसे कैसे कौन सी एंट्री कहाँ पर आएगी. ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट. Start posting the entries. I'm giving you say around 10 minutes. Start with the entry posting one by one and then I'll help you solve the question completely with the adjustment. जहां पर भी एडजस्टमेंट है उसको उस एंट्री को आप पहले ही मार्क कर लिया करो so that you know that out of all the entries here I have to make some adjustment like machinery, then wages, depreciation on machine, then stock is your closing stock. Salaries में adjustment है.
रेंट में एडजस्टमेंट है। योर डेटर्स एंड इंश्योरेंस। So apart from that, please start and then we'll discuss the question. There's any question side by side, please ask. मैम हाँ जी बेटा बताओ। मैम ये वेजिस वाली एडजस्टमेंट कैसे होगी? एडजस्टमेंट्स अभी आप छोड़ दो, सारी एडजस्टमेंट्स मैं डिस्कस करूंगी। अभी एंट्रीज आप पुट कर लो सारी ट्रायल बैलेंस से। ठीक है, तो जैसे परचेजेस है, परचेजेस ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। तो ये डेबिट वाली यस मैम। अमाउंट परचेजेस की है, क्रेडिट वाली अमाउंट सेल्स की है। उसी तरह डेटर्स और क्रेडिटर्स इकट्ठे दिया हुआ है, डेबिट वाली अमाउंट डेटर्स की है, क्रेडिट वाली अमाउंट क्रेडिटर्स की है। आप एक बारी सिर्फ ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज पुट कर दो, फिर मैं एडजस्टमेंट सारी करवा दूंगी आपको।
Okay, so class, what we'll do, I hope you have been able to post the entries as per the format. What I'll do is I'll take up each of the accounts one by one, and then after closing one account, we'll move to the next account. Let's start with the trading account. In the format, the heading will be trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2010. So please write the complete statement for the year ending 31st March 2010. आप पूरी स्टेटमेंट लिखोगे, फिर जो आपने ये अकाउंट बनाया है, the upper portion is the trading account and the lower portion is the profit and loss account. I will start with the first entry. The first entry in the trading account is to opening stock, and the amount of opening stock given in the question is 40,000. Okay. After that, next item which appears on the debit side is on purchases. So purchases is also showing an adjustment. So abhi I'll write two purchases, and in the inner column itself I will write the amount 1,30,295. अभी मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट के लिए स्पेस छोड़ रही हूँ, क्योंकि परचेजेस और वेजेस की एडजस्टमेंट साथ में दी हुई है. सो आई विल राइट वेजेस ऑल्सो हेयर, because wages are also direct expenses related to production, hence appear in the trading account. So I write down two wages and the amount is again written in the inner column because there is an adjustment. Okay, leave this space. After that, there is some problem with Meet. I'll just move back to the display. So coming back, the other entries to be made in the trading account are sales दी हुई है आपको. तो पहले यहाँ पर हम बाय सेल्स लिखेंगे क्रेडिट साइड पर amount 180,500. Apart from this, okay, there is one more entry, octroi. So two octroi will also come in the trading account. डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होता है, टैक्स होता है बेसिकली जब आप एक स्टेट का बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे स्टेट में एंटर करते हो, एंड द अमाउंट इज 1,000. Okay, so from the trial balance I have picked these entries. Now I will move to the adjustments. Purchases include a machinery purchased on 1st July 2010 for 4,000. When we use the term purchases, it is only for the goods or raw material purchased. अगर मशीनरी का परचेज हुआ है, मशीनरी आपका एसेट होता है, तो वो मैम आप. हाँ जी सिमरन बोलो. मैम ऑक्ट्रॉय 500 नहीं है. एक मिनट बेटा, मेरे को तो 1,000 दिखा है. 1,000 है. इंश्योरेंस 125. अच्छा नहीं नहीं 500 है, यू राइट. एक्चुअली ये डिस्प्ले छोटा हो जाता है. यस, ऑक्ट्रॉय विल बी 500. ओके, so insurance is 1,000 then, so I've read it incorrectly, so please correct that. Octroi will be 500. Okay, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट मशीनरी. अगर मशीनरी कोई परचेज हुई है तो मशीन अकाउंट में ही आएगी, वो परचेजेस में नहीं आएगी. तो सबसे पहली करेक्शन जो हम इस चीज की करेंगे वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे, लेस द अमाउंट ऑफ मशीनरी.
and that amount is 4,000. Okay, this 4,000 will be added to the machine account when we prepare the balance sheet. So I will show the second adjustment in the balance sheet, and what I'll do is मैं यहाँ पर एक बारी आपको दिखा देती हूँ एडजस्टमेंट. So somewhere here when we prepare the balance sheet, as on 31st March 2010, you have left hand side as the liabilities side and right hand side as the asset side. So there, when up when you write your machinery amount as 16,000, you will also add new machine there, 4,000. Okay, so two effects of this 4,000 have come. One, it is reduced from the amount of purchases, and second, it is added to the amount of machinery in the balance sheet. Okay, so moving back, after this, one more statement is given. Wages include 2,000 paid on its erection. इसका मतलब जब मशीन इंस्टॉल हो रही थी उस टाइम पर आपने 2,000 की वेजेस पुट करी, आपने पे करी. Can anyone tell me how will this adjustment be done? There's any expense on the asset? Yes. Subtracted from wages and added in machine account. वेरी गुड प्रणत. अगर कोई भी एक्सपेंस इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन पर होता है तो वो मशीन की वैल्यू में ही ऐड हो जाता है. ओके, दैट इज ट्रीटेड as a part of the purchase price of that asset. So which means 2,000 जो आपने wages पे करी है इंस्टॉलेशन पे, आपको टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी पड़ी? 4,000 उसका परचेज प्राइस था, प्लस 2,000 जो उसके इंस्टॉलेशन पे खर्च हुआ है. तो आप ये 2,000 पहले वेजेस में से यहाँ पर माइनस करोगे. ओके, and this will be added to the amount of purchases in the balance sheet. तो मशीनरी की जो परचेज प्राइस है उसमें मैं इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस 2,000 भी ऐड कर दूंगी. So to effect of 2,000, 2,000 is reduced from the amount of purchases and it is added to the amount of machinery in the balance sheet. Okay, so very important thing to remember is that if there is any expense on the machine at the time of installation, then that is treated as part of the cost price or purchase price of the machine. Okay, I hope both these adjustments are clear. So which now means that we close this amount also. Ma'am, what about purchase return and sales return? दिया हुआ रिटर्न? अच्छा Yes, हाँ, ma'am. रिटर्न दिया हुआ है तो बेटा वो भी माइनस करेंगे. एक मिनट में बताती हूँ. आई मिस्ड दैट. So 2,400 and 195 class here is given as returns. जो डेबिट वैल्यू होती है रिटर्न्स की वो होती है आपकी सेल्स रिटर्न. डेबिट क्यों होती है सेल्स रिटर्न? क्योंकि आपने कस्टमर को गुड्स भेजे, उसने आपको वो वापस कर दिए. 2,400 के गुड्स कस्टमर को पसंद नहीं आए, उसने वापस कर दिए. सिंस दे आर कमिंग बैक टू द बिजनेस, this amount is debited. It is kind of a loss for the business, so it is debited. So 2,400 will be reduced from the amount of
सेल्स। और जो क्रेडिट रिटर्न्स होते हैं वो बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, वो आपके परचेज रिटर्न होते हैं। तो लेस रिटर्न आप यहाँ पर भी कर दोगे एंड दैट अमाउंट विल बी 195. Okay, so what is the final amount of purchases now? 126. मैम डिस्काउंट का क्या करेंगे? डिस्काउंट बेटा आपका जाएगा पीएनएल में, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट पेड। ओके, तो वो आपका पीएनएल में जाएगा। तो इज दिस द फाइनल अमाउंट कमिंग 126,100? प्लीज चेक। Yes, ma'am. ओके, यस मैम। ठीक है, थैंक यू बेटा। एंड इन दी sales value, the final amount will be 178,100. Okay, so after this, to close the trading account, one entry which is left is of closing stock. तो क्लोजिंग स्टॉक जब आपको एडजस्टमेंट में दिया होता है, तो अगेन इट कम्स एट टू प्लेसेस। वन विल बी द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बाय क्लोजिंग स्टॉक 40925, and in the balance sheet on the asset side closing stock will be entered as 40925. तो अभी फिलहाल हमने ट्रेडिंग अकाउंट की सारी एंट्रीज कर ली हैं, तो वी विल क्लोज द ट्रेडिंग अकाउंट एंड देन वी विल मूव टू द पीएनएल अकाउंट। प्लीज कैलकुलेट। ओके, तो तन्मय हैज कैलकुलेटेड डेबिट साइड का कम आ रहा है total both the sides। See, I think profit आएगा इस क्वेश्चन में। just check, then I'll check the answer। वैल्यूज के हिसाब से प्रॉफिट है। Ma'am, the profit is coming 42,425. एक मिनट बेटा, मैं चेक करती हूँ। 42 तो नहीं आ रहा। what I am getting is 31,900 in the book। please check। Yes, ma'am. अन्वेषा, 3100. अन्वेषा कैलकुलेशन चेक करो आप। ओके, कितना टोटल आ रहा है अमन? Ma'am, debit side total तो कम आ रहा है ना बेटा? 1,66,600 आ रहा है। तो कम आ रहा है। हाँ, तो फिर और क्रेडिट साइड का आ रहा है 2,19,025। 2,19,000। Yes, ma'am. 2,19,025 rupees. 025, एक बार ही चेक करो डिफरेंस। मैम 31,900 ही आ रहा है। हाँ अन्वेषा, आप चेक 900 करो। ही आ रहा है। हाँ, प्लीज ऑल ऑफ यू चेक एंड यूज सिंपल कैलकुलेटर्स, दे आर परमिटेड इन योर मेन एग्जाम। so your debit total was less than credit total, so the balancing figure came on the debit side। हाँ मैम, 31,900 ही आ रहा है। ठीक है बेटा, use your calculator very carefully, don't make calculation mistakes in the paper। okay, unnecessarily you will lose marks। so debit और क्रेडिट का हम टोटल करते हैं। अगर डेबिट कम होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और अगर क्रेडिट कम होता है तो आपकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो राइट हैंड साइड पे आती है, उसको हम बाय ग्रॉस लॉस लिखते हैं। ओके, सो हेयर वी हैव गॉट ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप दिस one step is clear। first trading account is clear to everyone। if there are any doubts in the trading account, please ask so that we can move to the next account, P&L account। Are you having economics class after this? यस मैम।
अभी 12:30 है।